Okay, let's learn modals today. Model भी बोलते हैं इसे, but sometimes some people pronounce it modals. Okay, so what are modals? Like some words, 80% of English you learn in tenses, है ना? But 20% English is without tenses also, where these kind of things come. So first thing is modals. Modals are like can, could, may, might. All these come in this category. ये सब आते हैं इसमें. Now they are called as free verbs. One you have heard about helping verb, है ना? Like is, am, are, do, does. ये सब क्या होते हैं? Helping verbs होते हैं. Now one is main verb which you put here in the rule. जो main काम होता है, खाना पीना सोना उठना, all these are main verbs. And is, am, are, do, does, has, have, these are helping verbs. But these are called as free verbs. Why? Because some modals can be used in all the tenses. Like would can be used in present, past and future. तीनों में यूज हो सकता है, इसीलिए इसको फ्री वर्ब्स बोलते हैं. दे आर नॉट बाउंडेड बाय टेंसेस कि वॉज वर है तो उसे पास्ट में ही यूज होगा, है ना. बट इन दिस कुड है वो प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है, पास्ट में भी यूज हो सकता है. वुड है वो तीनों में यूज हो सकता है, लाइक दिस. ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज free verbs. Now rule is very simple. Subject, then any modal and then first form. After modal you will always use first form. तो कोई टेंशन नहीं है, easy है यूज करना, because you know first form is very easy to remember. Second and third form is difficult to remember. So now let's start with can first. Can. Now can has mainly two usage. First use is for permission. जब हमें किसी से permission मांगनी होती है. अब किससे? फ्रेंड से, या फिर एनी पर्सन हु इज फ्रेंडली विद यू. फॉर एग्जाम्पल, आई एम योर ट्रेनर बट आई एम फ्रेंडली विद यू राइट नाउ इन दिस इंस्टीट्यूट, सो यू कैन यूज कैन विद मी. फॉर एग्जाम्पल, मैम कैन आई यूज योर पेन? But in schools and other places we will never use can, because it is used only with friends and people those whom with you are friendly. That's why in schools we never say, ma'am can I come in? What we say always, may I come in? May also I'll teach you, because may shows respect. Can is very casual, it doesn't have respect. Okay, it is very casual, which is used among friends. के आगे हम कोई formality तो करते ही नहीं है ना. So we use can. So now example, can I use your mobile? When you want to ask somebody, क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ? Could you lend me your book? Lend मतलब उधार देना, क्या आप अपनी बुक मुझे उधार दे सकते हो? Like this you will use. Okay, and don't get confused with this is also sakta hai, and then simple present tense also ta hai, thi hai, but this is for permission. Okay, that is your routine. Simple present tense you use for routine, and these you will use for permission. First use is permission, कोई भी permission मांगनी है. But remember this among friends, okay, in a casual way. Second use of can is present ability. अभी आप क्या कर सकते हो, आपका टैलेंट क्या है? लाइक माई टैलेंट इज आई कैन कुक फूड इन अ जिफी. इन अ जिफी मीन्स चुटकियों में, वेरी क्विकली. इन अ जिफी, आई कैन कुक फूड इन अ जिफी. और ही कैन बेफूल पीपल इन अ जिफी. बेफूल मीन्स उल्लू बनाना, वो दूसरों को उल्लू बना सकता है चुटकियों में. एनीथिंग यू कैन राइट है. ही कैन befool people in a jiffy. So in a jiffy means चुटकियों में, very quickly. Understood? Both the things? Okay, now you make sentences, and you also make sentences and drop it in the comment.